तांकर interaction with the general public, तांका connection, emotional connection with these people, this is something is very personal to me and my family. मु चाहिबी कि निश्चित भाबरे महांगा कॉन्स्टिट्यूएंसी रे आमे गोटे इंडस्ट्रियल पार्क करू. विमेन एम्पावरमेंट उपरे कोन भाबिछन? स्पोर्ट्स इंफ्रा रे आमो गवर्नमेंट ऑलरेडी बहुत इनिशिएटिव्स नहीं सरची, बट वायलेंस करूची किए, वायलेंस करूची जो पार्टी, दोज हु वांट टू डिवाइड द सोसाइटी एंड गेट द वोट. लॉन्ग टर्म रे ओडिसा पे कोन हिजन से जिनसटा मु सबले मो बापांठो से मु देखिची और ताको शिखिची भी. वेलकम अंकित, आपण जने उद्योगपति आ एबे राजनीति से विषय कथा हवा, किंतु मु आपण टे व्यक्तिगत जीवन विषय जानि बाक. अंकित एज ए पर्सन केमिति कमेंट पाई ना एग्रेसिव केमिति? तो मोस्टली मु बहुत काम, क्वाइट, कंपोज्ड हुए, बट जितने कामों को आसे आई एम वेरी अग्रेसिव, वेरी ड्रिवन, वेरी एम्बिशियस भी. तो दैट इज हाउ सेमती ही मु. अंकित जदि हम देखिबा आपण तो इनोसेंट फेस तुमति के हेई छी बापांग ठारू गाली सुनिबा को पड़थो कि दुष्टमी करथिबे, बापा गाली दबा जेते इनोसेंट फेस देखि कि बापा आगबा टीचर एमन तो बंची एजेंती बंची नहीं केबे अनफॉर्चुनेटली, बट हाँ मतलब छोट बेले बहुत इंस्टेंसेस हेई छी जते बेले मते बहुत बदमाशी करिया को मते बहुत पनिशमेंट्स भी मिलची. तो होपफुली आई थिंक एबे मु बहुत आउरी काम हे गलेनी एबे. तो छोट बेले जीवन लक्ष्य कोनला बड़ा हेले मोर एया बनिबी? छोटो एम्बिशन थिला कि मु इंजीनियरिंग पढ़े, दैट वाज माय एम्बिशन. मोर के एम्बिशन नथला कि मु पायलट हुए कि डॉक्टर हुए कि कोन हुए, बस इंजीनियरिंग पढ़े बोली मोर गोटे लक्ष्य थिला. आउ फॉर्चुनेटली मु इंजीनियरिंग रा डिग्री भी कली. सो या, सो दैट वाज माय एम्बिशन. जेते एम्बिशन कथा उठी जे अपन के एजुकेशनल बैकग्राउंड विषय रे टिके हम दर्शक मन जानेबा चाहे. तो मु Bachelor of Engineering in Industrial Engineering and Management करची from RV College of Engineering Bangalore. तो मु 2018 पास आउट. तो सेटा मोर स्कूलिंग कोड थिला? स्कूलिंग मोर 10th and 12th both DAV CS4 चंद्रशेखरपुर DAV से 10th and 12th both मोर स्कूलिंग थिला. आपण दिटा अवार्ड भी पाइछन, बेस्ट साइंस प्रोजेक्ट रो आ गोटे बेस्ट चाइल्ड साइंटिस्ट रो. तो केबे इच्छा ही नहीं बड़ा कि मोटे साइंटिस्ट बनिबी, लैब रे काम करिबी? मते एप्लीकेशन बेस्ड एजुकेशन बहुत भल लागे. मो आमे जतले सेतले रिसर्च करथलु रिगार्डिंग सर्टेन प्रोजेक्ट कॉन्सेप्ट, इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम ग्रासेस, गोटे इलेक्ट्रोथर्मल प्रोसेस हुए जोटा कि एवरी ह्यूमन बॉडीज रे हुए, एनी ऑर्गेनिक बॉडीज रे हुए आपण कहि परिबे. तो जेमती कि सॉइल रे जो ग्रासेस रे सेथरे भी गोटे ए केमिकल रिएक्शन टा हुए, सेई थ्रू इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन पई कि हमें फोकस करथलु. बट एज ऑन फुल टाइम रिसर्च करिबा मोर सेटा के पैशन एबे हेई नि. तो मो मोस्टली एप्लीकेशन बेस्ड कॉन्सेप्ट्स आइडियाज को एक्सप्लोर करिया रे मोर सेई थरे बहुत रुचि अछि. आपण अंडर 16 क्रिकेट रे ओडिसा को रिप्रेजेंट करथले. एटा पचारिबेनी कि आपण क्रिकेटर हबा के इच्छा थला नै, कारण सब पो मनन के इच्छा थाए. क्रिकेट को एज ए करियर काहे के परस्यू करलेनी? कारण आपण भलो खेलु भी थिले. राइट. क्लास 1 रो मु क्रिकेट कोचिंग स्टार्ट करथली एंड अंडर 16 ओडिसा स्कूल्स टीम रो मु कैप्टन थिली. एंड अंडर 16 ओडिसा रे मु खेली छी, बट नॉट एज अ कैप्टन बट एज अ प्लेयर मु खेलथिली. अंडर 16 स्कूल्स रे हमें कैप्टन थिलु. मु आमे लखनऊ जाइथलु खेलिबा को रिप्रेजेंटिंग ओडिसा. एंड तापरे हम बोर्ड्स जस्ट स्टार्ट होतला सेही टाइम रे. एंड करियर रो अलगा प्लान थिला, लाइफ रो अलगा प्लान थिला. ऑब्वियसली मु चाहउथली क्रिकेट को परस्यू करिया को, बट लाइफ रो प्लान्स अगरे सेटा रहिला नहीं. तो कोन लाइफ रो प्लान थिला टे कहे? तो लाइफ रो प्लान थिला कि मे बी बोर्ड ऊपर फोकस करा जो अगेन इमीडिएटली आफ्टर बोर्ड्स इंजीनियरिंग एग्जाम्स एंट्रेंसेस दिया जाए, तो तापर रिजल्ट एंड से प्रोसेस आफ्टर 12th जब थाए. तो सही भाग दौड़ रे एटा के भी क्रिकेटा आउ मु परस्यू कर पारलिनी. जे तो अपन करे तो अधूरा ड्रीम जो माने आज का जनरेशन जो मन चाहू चंदी कि हमें स्पोर्ट्स रे करियर बने अपन कोन कहिबे?
आजिका दिन रे और सेबेका दिन रे बहुत डिफरेंस है गलानी इन क्रिकेट रे स्कोप यदि अपन देखिबे सेही टाइम रे क्रिकेट रे ओनली आपण यदि गोटे स्टेट लेवल खेली पारछंदी और नेशनल लेवल रे आपण फॉर बीसीसीआई खेली पारछंदी बट एबे यू हैव स्कोप आपण आईपीएल आसी गलानी बहुत बड़ मात्रा रे होची सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग्स होची इंटरनेशनली अलग अलग काउंटीज खेला होची तो बहुत बड़ा स्कोप अछि क्रिकेट रे अक्रॉस द ग्लोब नुआ नुआ कंट्रीज अब क्रिकेट को अडॉप्ट कर लाइक अमेरिका जापान सेमन सो अडॉप्ट कर क्रिकेट को एज देयर स्पोर्ट सो एबे बड़ा स्कोप अछि अक्रॉस द ग्लोब से सही स्कोप भी नथिला हम पाखरे तो एबे जो माने इंटरेस्टेड अछंती और देयर स्किल्ड इन स्पोर्ट्स आमो गवर्नमेंट भी तांको प्रमोट करछ एंड पर्सनल लेवल रे भी आमो फॉर द पीपल हु आर कनेक्टेड विथ मी सेमाने भी जद कि चाहउचंती टू परस्यू देयर करियर एंड फॉर सम फाइनेंशियल और सम अदर रीजंस रही पनी आमे तांको भी सपोर्ट करछु इन आवर वे व्हाटएवर वी कैन एबे भी देखचंती क्रिकेट एबे टाइम हेनी बट इंडिया पाकिस्तान मैच जदी सेम थ्रिलिंग मैचेस थाए देन यू कांट मिस दोस मैचेस राइट आईपीएल देखंती अनफॉर्चूनेटली देखि पारनी बिकॉज़ ऑफ इलेक्शंस एंड ऑल किंतु देखंती देखे एबे तो टाइम होना फेवरेट टीम आईपीएल के आईपीएल रे कोलकाता इज माय फेवरेट टीम फेवरेट क्रिकेटर एबे के अछन फेवरेट क्रिकेटर एबे का जनरेशन रे विराट कोहली सब यूथ मानकर आइकन राइट समवन हु ऑल एडमायर घरे अनुशासन केमती बापा मांक सहित रिलेशन केमती घरे छोट बेलू आमे बहुत डिसिप्लिन्ड वे रे एंड बहुत शेड्यूल्ड एंड टाइम टेबल रे आमे बड़ हिचु एई टाइम रे ए जिंस करिया दरकार दिस इज हाउ मतलब बहुत रेस्ट्रिक्शंस एंड बहुत शेड्यूल रे रेस्ट्रिक्शंस इन अ वेरी गुड वे मु कहि परिबी एई टाइम रे पाठ पढ़ा हबा कथा एई टाइम रे खाया कथा एई टाइम रे सोया कथा एई टाइम रे उठिया कथा स्कूल पर रेस्ट पर खेल पर देन पाठ पढ़ा तो वी हैड अ वेरी शेड्यूल लाइफस्टाइल इन चाइल्डहुड टाइम रे एंड डिसिप्लिन्ड वे रे आमे बहुत बड़ हिचु कहीं हम गोटे जॉइंट फैमिली थिला तो वी वेर अ गैंग ऑफ 7 पीपल 7 बॉयज मोर 7 भाई आमे कजिन ब्रदर्स माने समस्ते 7 भाई थिलो तो 7 ब्रदर्स माने यदि अपन डिसिप्लिन रखिबे नी से घर को ऊपर तळ करी रखिबे तो सेमिति आमे बहुत डिसिप्लिन्ड एंड बहुत शेड्यूल्ड वे रे आमे समस्ते रहउथिलो का से त टिके बेसी फ्रेंडली बाबा का सहित ना मां का सहित दी जन सहित दी जन किछि इस माने किछि गोटे प्रॉब्लम हे छि काहा बस के कहबे बाबा सेटा तो ऑब्वियसली गोटे पुओ ता मां को ही कहबा राइट हॉबीज कोन नै छै लीजर टाइम रे अपन कोन करबे को भल पान लीजर टाइम रे एबे मतलब केबे क्रिकेट खेलु हमें लीजर टाइम रे बुक्स पढ़े को मते भल लागे किछि नुआ साइंटिफिकल रिसर्च और डिस्कवरी जोड़ा हेथिबो और कौन ऑन गोइंग लेटेस्ट एडवांसमेंट इन साइंस हेथिबो से विषय में पढ़े को इच्छा हुए न्यू टेक्नोलॉजीज विषय पढ़े को इच्छा हुए न्यूज इज समथिंग आई एम पैशनेट अबाउट सब बेले मु किछ ना किछ पढ़ु थाए तो हॉबीज एंड ट्रैवलिंग आई लव टू ट्रैवल तो दिस इज हाउ आई स्पेंड मोस्ट ऑफ माय लीजर टाइम गोटे वियर्ड हॉबीज कहबे जोटा समस्त वियर्ड लागे बट यू लव टू डू weird hobbies can't remember anything. I don't think I have any weird आपण एबे जने सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर किंतु करियर परस्यू कले इंजीनियरिंग रे इंजीनियर रु एंटरप्रेन्योर काहेकी इ शिफ्टिंग ता कोन पई राइट तो मु जो इंजीनियरिंग करची सही इंजीनियरिंग रे मोस्टली फोकस करे ऑन ऑपरेशन मैनेजमेंट फाइनेंस स्टैटिस्टिक्स इकोनॉमिक्स ता ऊपर मोस्टली फोकस करे and entrepreneurship is very natural to the engineering I did and jo background ro mu aschi from our family has a very long association with business so I had that mindset always ki rather than going for a job let me create job for people गोटे बहुत बढ़िया चिंताधारा कि मु जॉब करबिनी लोक मान को जॉब देबी अनएम्प्लॉयमेंट को टारगेट मन से एमती माइंड रे थिला कि अनएम्प्लॉयमेंट को टारगेट करिवि ना एमती मते एंटरप्रेन्योर हमारा माइंडसेट थिला दी टांग थिला मो भी चाहूथली एंटरप्रेन्योरशिप को परस्यू करिया को
ता सहित भी सर गोटे वैल्यू एडिशन इज कि अपन जॉब्स क्रिएट करंती राइट एंड for example entrepreneurship is management of resources right so you have to manage the resources and allocate them accordingly now on a larger scale this is how it is done so resource management and giving employment to people so both ditaanga moro bahut ruchi thila ditaanga re ଆଜିର ୟୁଥ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ଜଣେ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ଏଣ୍ଟରପ୍ରେନ୍ୟର ହେବାକୁ ଚାହିଁବେ କ'ଣ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କ୍ୱାଲିଟିଜ୍ ରହିବା ଦରକାର ଆଉ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର କାହା ଉପରେ କାମ କରିବା ଦରକାର ସେଟା ଟିକେ successful to mu kahibini I'm still pursuing I was still pursuing I left everything right now for while entering into politics now so but for sure entrepreneurship jodi ki pursue kariya ku chahu chi sebe ka time aur ebe ka time mein bahut difference achi बहुत अपॉर्चुनिटीज अच्छी अवेयरनेस अच्छी केमती अपन कंपनी स्टार्ट कर पारिबे को बिजनेसेस को करि पारे व्हाट इज द मार्केट सेगमेंट टैम गोटे कुआ जाए टोटल मार्केट वैल्यू व्हिच यू आर टारगेटिंग द गैप दैट इज देयर इन द मार्केट टू एड्रेस द रेवेन्यू दैट यू कैन टारगेट तो तापे फाइनेंस हो हायरिंग पीपल ऑल दोज अपॉर्चुनिटीज आर देयर टुडे अवेयरनेस अच्छी लोगों को भितरे थ्रू मीडिया थ्रू इंटरनेट एवरीथिंग गवर्नमेंट सबू गवर्नमेंट प्रमोट भी करछियाकू देन दिस इज द पार्ट कि अपन केमती परस्यू कर पारिबे सेकंड इज एंटरप्रेन्योरशिप स्पिरिट हवा दरकार नेवर गिविंग अप एटीट्यूड परसिवरेंस पेशेंस हार्ड वर्किंग ऑल दोस थिंग्स आर वेरी इंपोर्टेंट इट्स लाइक ए बॉर्न क्वालिटी एंटरप्रेन्योर हवा ପାଇଁ କିଛି बॉर्न क्वालिटी दरकार ना हार्ड वर्क रे हे जिवो मैनेज हे जिवो एंटरप्रेन्योर बॉर्न क्वालिटी मु केबे कहबिनी नेवर गिविंग अप एटीट्यूड सेटा बेसे important you don't give up even if you fail you don't give up you learn things there are no failures only learnings ताले you can do तो एंती केही भी जन्मरू एटा सिखि न थांती you can improve yourself आज अपन को कंपनी पई बहुत परिवार उपकृत केते खुशी लागे कि मु एते लोगों को जॉब देई पारि जे केते भल लागे खुशी थारू बेसी important होची कि सेंस ऑफ रिस्पांसिबिलिटी कि आई फील रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दोज फैमिलीज एज वेल कि आमे से एंटरप्रेन्योरशिप एवरी डे वी आर वेरी अप टू द मार्क कमिटेड रहू डेडिकेटेड रहू हार्ड वर्किंग करू कि जो फैमिलीज आर जो मैंने डिपेंडेंट अच्छा आम उपरे से गोटे सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट आम दे पारू ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एमती न हो कि आम कंपनी रे किछि इश्यू हुए तांको एम्प्लॉयमेंट पळेबो सेटा सबठु मोर सबठु बिगेस्ट फियर एम्प्लॉइज को पाएंगे एबे आपण राजनीति को आछंती कोन माइंड रे कोन अछि मु समाज सेवा सोशल सर्विस करबी ना किछि पॉलिटिकल एम्बिशंस अछि फ्यूचर रे के देखो तो एम्बिशन पॉलिटिक्स रे एज इन मोर सेमती किछि भी नाही मो फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप मो पॉलिटिक्स को आसली बिकॉज मोर रुचि थिला इनसाइड भितरु मु चाहूतली ए जिंस करबा को छोट बेलू इच्छा थिला ना टिके बड़ हे के एजेंसी छोट बेलू निश्चित इच्छा थिला सब बेले मु देखे मो बापा को डे एंड नाइट सेल्फलेसली से लोगों पई काम करंती तो मु भी सही क्वेश्चन पचारे मतलब आपण माने सेल्फलेसली डे एंड नाइट लोगों पई काम करंती लोगों को हक पई की लड़ाई करंती यू स्टैंड फॉर द पीपल व्हेन यू आर नॉट इन अ गुड पोजीशन आल्सो तो यही शक्ति कोठू आसे आपन को से कौन जिनसा ड्राइव करे तो एंड ऑफ द डे जो सैटिस्फैक्शन मिले तांको एंड ऑफ द डे जो लोक मानकर स्माइल दैट इज मच मोर इंपोर्टेंट किंतु बेले बेले अंकित एमिति होय हम लोक मानन पई करंती किंतु गोटे नेगेटिव अप्रोच क्रिएट हो जाए लोक माने आपन के अगेंस्ट रे ही जानती से सिचुएशन का आपन केमते डील करिवे आई थिंक आमे हम बेस्ट ही कर परिबा रेस्ट आमे लोकों को ऊपर छाड़ी दबा जदि लोकों को लोक माने गोटे नेगेटिव परसेप्शन क्रिएट करचंती जदि आपण को हेल्प करिया चाहउचंती देन आई थिंक आमे ही कोठी भूल करछु जोटा कि भलो वे रे सेटा पोर्ट्रे ही पारनी फेवरेट पॉलिटिशियन की आपण का फेवरेट पॉलिटिशियन बहुत कैंडिडेटली कहबी कि ऑनरेबल सीएम नवीन पटनायक जी मतलब ही आई थिंक ही इज समवन आई एडमायर अ लॉट आपण कहली कि आपनकर आदर्श नेता ऑनरेबल सीएम को क्वालिटीटा मोर ऑनरेबल सीएम करा जोटा आपन को इंस्पायर करे कि सो हिज सिंप्लिसिटी ही इज अ प्योर जेंटलमैन
selflessly he only believes in giving service to the people, helping the poor people, community development, social development, empowering the women, empowering the youth. Odisha केमती as a state आगु बढ़ी पारिबा on a global platform से ता ऊपर सबले फोकस करी आछन selflessly. And he's a gentleman, true gentleman. आपने तांगे तो मिसिबे, he is very charismatic, and when you speak with him, the way he approaches, the way he has a perception about things is something out of this world. So that is something I really admire about him. ଆପଣଙ୍କ ବାପା ବି ଜଣେ ଅସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିରେ, ତାଙ୍କର କୋଉ କ୍ୱାଲିଟିଜ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଇନ୍ସପାୟାର କରିଛି ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିକୁ ଆସିବା ପାଇଁ? ତ ତାଙ୍କ ହାର୍ଡ ୱାର୍କ, ତାଙ୍କ वे ऑफ थिंकिंग, वे ऑफ thinking about development, way of thinking about how resolving people's problem, ତାଙ୍କର interaction with the general public, तांका connection, emotional connection with his people, his constituents, that is something very really unique. मतलब एटा मु I think कहाय तभी देखनी एमती, मतलब से एक मीटिंग रे कोहुत वे people will be crying, मतलब out of love and emotion. So that is something very unique. I have never seen such type of emotion and love with anyone. न्याचुराली को गुणटा आपन को पाखु इनहेरिट हेची और कोटा आपन सिखी चंती बापा ठारो देखि देखि इनहेरिट को हेची सेटा तो मु न्याचुराली किछि तो ओटे थिबो लाइक हेल्पिंग नेचर किछि सेटा मु कमेंट करिया ठीक हबनी. तो बट सिखी की देखि की बहुत जिंस सिखी छी, द वे ही अप्रोचेस पीपल, सेकेंडली लोगों को से तो एते बहुत डाउन टू अर्थ है कि अप्रोच करती विथ अ हम्बलनेस एंड स्माइल इन हिज फेस. से जिनसटा मु सबले मो बापांठु सेटा मु देखिछि और ताको सिखिछि भी. अपन जने उद्योगपति से एक्सपीरियंस आपन को केमिति हेल्प करछि एबे पॉलिटिक्स रे, आ कोन नुवा चैलेंजेस देखछन्ती पॉलिटिक्स रे जोटा कि एंटरप्रेन्योरशिप रे नथिला एबे नुवा? तो एठी एंटरप्रेन्योरशिप रे आमे बहुत जॉब्स क्रिएट करछु, आमे किछि मार्केट्स को एड्रेस करछु जो मार्केट्स रे बहुत बड़ा गैप थिला टू बी एड्रेस्ड. तो मु बिलीव करछि जो एक्सपीरियंस टा मु सेउठु पाइली, जो माने आम क्लाइंट्स थिले तांकटो जो एक्सपीरियंस मु नेली, तांका रिक्वायरमेंट कोन थिला, मु भाबुछि कि सही जिंस को मु स्टडी करी कि सही जिंस को मु जति कि एक्सपीरियंस करिछि, थ्रू दैट आई कैन क्रिएट अ कंड्यूसिव एनवायरनमेंट फॉर द इंडस्ट्री टू कम इन. तो मु चाहिबी कि निश्चित भाव में महांगा कॉन्स्टिट्यूएंसी रे आमे गोटे इंडस्ट्रियल पार्क करू, इंडस्ट्रीज को आनिके एस्टाब्लिश करो, जॉब्स क्रिएट करू, स्किल डेवलपमेंट ऊपर फोकस करू, जो लेबरर्स माने अछंती तांका सेफ्टी, तांकर क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूवमेंट करिया को हेल्प करू. तो मोर किछि आइडियाज अछि, अ डिफरेंट न्यू पर्सपेक्टिव. तो मु ताहु चाहिबी कि सही जिंस को मु आनिके इंप्लीमेंट करे. अपन जने यूथ लीडर अनएम्प्लॉयमेंट को तो अपन एड्रेस करिवि, ता छोडा अपन यूथ मानक पय कोन करिवा को चाहिबी? यूथ मानक पय कि सबुठो इंपोर्टेंट आज का दिन रे होची एम्प्लॉयमेंट. एम्प्लॉयमेंट सहित आई डोंट थिंक बेसी लोक रियलाइज करंती जिंस स्किल डेवलपमेंट, मतलब आपण से सक्षम हवा दरकार टू गेट द एम्प्लॉयमेंट. एटा केवल यूथ नुह एमे वुमेन माने भी बहुत स्किल डेवलप रे फोकस करछन कि हाउस वाइफ हवा चाहू नांती, समस्त चाहछन एमे वर्किंग हाउस वाइफ भी बहुत काम करंती, बट किछ ना एक्स्ट्रा स्किल डेवलप ता ऊपर भी किछ निश्चित. देखो तो लर्निंग इज अ साइक्लिक प्रोसेस, राइट, कंटीन्यूअस प्रोसेस. तो जदी हमें गोटे एम्प्लॉय गोटे जॉब रे जॉइन करछि ताकू निजो को अपग्रेड करिया पड़ियो विद द टाइम एंड विद द मार्केट डिमांड, राइट. तो स्किल ता निजो को अपग्रेड करिया को पड़े थ्रू आउट हिज लाइफ टाइम. जदी आपण गोटे आईटी सॉफ्टवेयर एम्प्लॉय देखिबे ताकू सब बळे नॉलेज ट्रांसफर्स, ट्रेनिंग रे सब बळे पीरियडिकली पठा होता है. तो सेहीटा को से माने अपग्रेड करन तक स्किल्स को और नॉलेज को जो हेल्प करके मार्केट डिमांड को केटर करिया को. सिमिलरली आम जो एम्प्लॉयज माने आमे चाहूछु
white collar employment generate କରିବାକୁ ଯଦି ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ସେଇ ପିଲାମାନେ ସେଇ ସ୍କିଲ୍ ସେଟ୍ରେ ତାଙ୍କୁ ଅପଗ୍ରେଡ୍ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ଲର୍ନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାହେଲେ ହିଁ ସେମାନେ ଲମ୍ବା ଟାଇମ୍ ପାଇଁ କି ସେଇ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟକୁ ସଷ୍ଟେନେବଲ୍ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ପାଇପାରିବେ, ଅଦରୱାଇଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ वोंट बी पॉसिबल। वुमेन कथा उठेली, वुमेन एम्पावरमेंट उपरे कोन जेमति स्किल डेवलपमेंट गोटे पार्ट हे गला, वुमेन एम्पावरमेंट उपरे कोन भाबी चंदी, कोन जदि आपण आसु चंदी पावर को कोन करिवे? देखो वुमेन एम्पावरमेंट रे आम गवर्नमेंट लास्ट 25 इयर्स हलानी बहुत जिंस करछि। आपण लास्ट 20 इयर्स 25 इयर्स पूर्व देखिबे वुमेन वेर अफ्रेड टू कम आउट देयर हाउसेस, राइट? एंड एसएचजी थ्रू रे राइट, एसएचजी हो आपण जो माने एसएचजी रे भी नहांती भी मतलब आज का दिन रे से माने घर बाहर को आसे कि दे आर प्लेइंग अ मेजर रोल इन एवरी सेक्टर ऑफ लाइफ। एंड अपन देखंतु आई विल गिव यू 3-4 एग्जांपल्स। फर्स्ट इज रिप्रेजेंटेशन। अपन देखिबे जी आज का दिन रे पंचायती राज सिस्टम रे आवर ऑनरेबल सीएम हैज प्रॉमिस्ड एंड डिलीवर्ड दिस 50% reservation is for women. For sarpanch and PS members, all those systems रे हमें 50% reservations are there. ता माने कौन कि women माने वो घरे रोना दे, not limited to their houses. They're coming out and fighting elections right now, right? So people are coming to them on a daily basis for the next 5 years and तांका grievances जा रहुची तांका through रे ही से माने ताको address करूचंती. So that is one, empowering them, right? They are key decision makers in the ground level, on the panchayat levels. Then second part is jinti apan koile mission shakti and SHGs and all those parts, sei thare they have got a opportunity to earn money jota ki am someone support kar pa family ko, right? They are not dependent on men anymore. They are earning their own money. They are independent. They can take their own decisions right now. Then after that अपन देखिए कि एजुकेशन रे आम गवर्नमेंट बहुत फोकस करछि एजुकेशन रे। अपन देखिए कि राइट नाउ 5T स्कूल्स आमे बहुत ऑलमोस्ट maximum schools have been covered in entire Odisha under 5T. Some are left that will also be covered in the due process. So सही तरह a digital way of approaching education जोड़ा कि हम honorable CM initiative नहीं चंदी। So एजुकेशन जोड़ा पिला माने छोटो बड़ू से माने सही वे रे ग्रूम होचंती टू बी अ पार्ट ऑफ द लार्जर सोसाइटी। देन एजुकेशन परे जेमति कि आपने कोन स्किल डेवलपमेंट, अपग्रेडिंग देम, प्रिपेयरिंग देम फॉर एप्लीकेशन बेस्ड इंडस्ट्रीज, मतलब इंडस्ट्री बेस्ड लर्निंग होच तांको। सो दोज विल हेल्प इन द फ्यूचर। इट मतलब इट वोंट हेल्प इन अ डे, राइट? But it is a process that will have a cascading effects over the years. जे तो अपन जने स्पोर्ट्स पर्सन ओडिसा रे स्पोर्ट्स इंफ्रा पई कोन करेबे पावर को असला स्पोर्ट्स इंफ्रा रे आमो गवर्नमेंट ऑलरेडी बहुत इनिशिएटिव्स नहीं सरची। अपन देखिबे कि आमे हॉकी वर्ल्ड कप ओडिसा रे बहुत सक्सेसफुली ताको कंडक्ट करथिलु। इवन हॉकी रे स्पॉन्सरशिप ओडिसा गवर्नमेंट एंटायर हॉकी रो मेजर स्पॉन्सरशिप करचे। जेतले केही भी सपोर्ट कोनथले आवर ऑनरेबल सीएम सपोर्टेड हॉकी आल्सो। एंड इन द रूरल एरियाज इन ओडिशा हैविंग बेस्ट ऑफ हॉकी स्टेडियम्स जोड़ा कि इंटरनेशनल कंट्रीज रे भी नथिबो। तो हॉकी पई कि इवन आम गवर्नमेंट स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर पई कि आम गवर्नमेंट पंचायत लेवल्स रे इन zonal level रे we are developing hockey stadiums, mini stadiums, hockey, athletics, cricket, football, मतलब multiple sports that can be played in a one stadium. Mini stadiums are being created in zonal levels across Odisha. तो जो थरे कि जो मान को रुचि थी वो स्पोर्ट्स को परस्यू करी बारे तो दे कैन गो एंड पार्टिसिपेट, दे कैन लर्न स्किल तांकर बढ़ी परिबे एंड कंपटीशन से भी पार्टिसिपेट करिया पर तांको सुजोग मिलिबो। तो ता परे भी ऑलरेडी गवर्नमेंट बहुत इनिशिएटिव्स नहीं छी, बट मु जदी इफ गिवन मी इफ आई गेट अ अपॉर्चुनिटी इन दिस देन स्पोर्ट्स को आउरी कॉम्प्रिहेंसिवली केमती आमे डेवलप कर परिबा कि गोटे पिला गोटे स्पोर्ट्स को परसीव करि परिबो
तार चाइल्डहुड रो एंड से तार एक्सेल करिक इन द ओलंपिक्स हो वर्ल्ड कप हो सही टारगेट कर परिबो on a more targeted basis or a more focused way रे केमती हम approach नहीं परिबा जे आपण जने यूथ लीडर जे यूथ इन पॉलिटिक्स कथा आसे से लोक माइंड रे फ्रेम हो जाए कि वायलेंस से जिन सब आपण केमती एड्रेस करिवे यूथ लीडर हिसाब रे कारण एटा कोट ना कोटी ट्रुथ की यूथ माने वायलेंस रे बहुत इन्वॉल्व हो जाते केमती एड्रेस करिवे आपण राइट तो आपण देखिबे एवे रिसेंटली अक्रॉस इंडिया टिके वायलेंस बढ़ी ड्यूरिंग इलेक्शन टाइम्स आपण कॉलेज इलेक्शंस हो पंचायती लेवल्स रे इलेक्शंस हो और जनरल इलेक्शंस हो वायलेंस टिके बढ़ी बट वायलेंस करूची किए वायलेंस करूची जो पार्टी those who want to divide the society and get the votes so से थरे से मैंने बहुत बैड इन्फ्लुएंस करछंती यूथ मानन को ए जिंस को प्रोपैगेट करिया को सो दैट दे आर गेटिंग बेनिफिटेड बट द यूथ मानन को किछि भी से थरे बेनिफिट रहउनी दे आर जस्ट बीइंग प्लेड एंड तांका नारे केस होउची तांका करियर खराब होउची एंड सब दिन पई गोटे ब्लैक लिस्टेड टाइप रो से माने हेई होउचंती तो मु यूथ मन को अपील करबी कि टू नॉट गो विथ दोस टाइप ऑफ पॉलिटिशियंस और पॉलिटिक्स and not be influenced by all these people who are trying to create all this bad influence and a very non-conducive environment. Politics kaun pai ki hue? Politics is a process. This is a process where we can elect our representatives jo mane ki who can represent us at some platform jo thare ki amar kichi issues thibo ground re taku ne ki address kar pare taku resolve kar pare government level रे पॉलिटिक्स इज अ सिस्टम जो ताकि हमें सही पाए कि इलेक्शंस गुडा को कंडक्ट करे सर्विस टाइप रो एब्सोल्युटली बट एमाने किछि जो माने चाहते कि समाने सब दिन पे पावर रे रुहंतु जो माने चाहते कि टू डू दिस डर्टी पॉलिटिक्स दे इन्फ्लुएंस दिस पीपल एंड यूथ माने से मैच्योरिटी न आसिन थाय सही टाइम रे सही एज रे दे गो इन द बैड डायरेक्शन अपन सोशल मीडिया को गोटे प्लेटफॉर्म बनेबे यूथ मानक पाखरे पहुंचबा पई गोटे प्रॉपर मैसेज रखिबा पई केमते सोशल मीडिया निश्चित सोशल मीडिया गोटे बहुत ही पावरफुल टूल आज का दिन रे जोड़ा मु फील करछि आउ आपने देखिबे सोशल मीडिया पूर्वरु आम लाइफ कोन थिला सोशल मीडिया परे कोन आम लाइफ थिला सोशल मीडिया पूर्वरु जदि भी किछि हमकु कम्युनिकेशन और एनी इंफॉर्मेशन दैट वी वांटेड टू नो सेटा न्यूज़पेपर की इलेक्ट्रॉनिक मीडिया माध्यम रे ही आसी पारथला बट आज का दिन रे जदि रशिया रे गोटे मिसाइल भी फायर होछि विद इन सेकंड्स we are able to know sitting here in Mahanga, right? So fastest way of communication is social media. अपनो तारा pros भी अच्छी तारा cons भी अच्छी, but pros is much more than the cons is what I believe. तो social media रे हमें awareness create कर पारिबा लोक मानक बाकू केमती त सर्विस पठे पारिया लोक माने केमती हमको तांकर grievances पहुंचे पारिबे सेटा भी हमें यूज कर पारिबा reviewing and monitoring the things once a development project is being taken up सेटा को भी हमें कर परिया फॉलोइंग अप पीपल व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ वर्क कामर स्टेटस कोन ऑल दोस थिंग्स सोशल मीडिया आई थिंक इज अ वेरी पावरफुल टूल दैट कैन बी यूज्ड इन गुड गवर्नेंस एआई टूल को अपन केमती यूज करबे जे तो अपन जने यूथ एआई टूल को केमती यूज करबे डेवलपमेंट पई फर्दर देखो एआई एंड एमएल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग जोटा हमें सुनु चुकी मार्केट रे बहुत बड़ा गोटे सेगमेंट और सेक्टर जोटा आसुची एबे is a very powerful tool and this has a positive and a negative side also लोकों बाको एमती इंफॉर्मेशन एक्सेस आछि जोटा एक्सेस आसिया कथा नुहे भी एंड डीप फेक अपन सुनिथबे डीप फेक जो थरे की किछि वीडियोस भी आसुची ऑफ प्लैगरिज्म और इश्यूज भी आसुची तो यही सब इश्यूज बहुत एड्रेस करार अछि बिकॉज़ एटा रेगुलेटेड मार्केट में कि रेगुलेटेड सेक्टर नुहे आई थिंक एआई एंड एमएल में यूज कर परिबा वंस इज रेगुलेटेड यदि रेगुलेटेड होनी इट कैन बी मिसयूज्ड इन अ वेरी बैड वे सो दैट विल बी माय कंसर्न एरिया एंड जदि रेगुलेशन आछि देन श्योरली एटा गुड गवर्नेंस पाइकी एंड टेकिंग अप अ लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड एंड थर्ड इज की identifying gaps
कोठी गैप्स रोची ह्यूमन इंडेक्सेस रे हो एंड ह्यूमन आपणकर जति सोशल डेवलपमेंट हो कम्युनिटी डेवलपमेंट हो कोठी गैप्स रोची एटा बहुत यूज करबो हमको गैप्स को आइडेंटिफाई करिया को आल्सो बट रेगुलेशन इज मच नीडेड थिंग फॉर एआई एंड एमएल लॉन्ग टर्म रे ओडिसा पई कोन विजन अछि ओडिशा देखो वी आर वेरी फॉर्चुनेट टू बी इन ओडिशा अपन जानथिबे Odisha is one of the largest iron ore producing state. We produce the largest amount of steel in India. We produce the largest amount of aluminium. We have almost 95% of chrome ore in Odisha. Odisha has a huge reserve of coal also. Odisha has a beautiful coastline of almost 482 kilometers. Odisha has everything that it needs to be prospered. And upon देखिए from the day our honorable CM has taken up the responsibility of Odisha, 2000 रे Odisha कौन थला and 2024 Odisha थला, there's a huge difference. You can see in all the sectors, in commerce, in education, in development of panchayats development हो, in industrialization, in IT sector also, huge development in human indexes. If you see huge improvements in the GDP of Odisha, in the revenue that Odisha is generating currently. If you see the indexes of Odisha, infant mortality, there are huge mortality issues that was there before 2000. अब आज का दिन तो compare करें infant हो और indexes हो, human indexes हो, infant mortality rate हो, maternal mortality rates हो, then per capita GDP हो, then if you see in agriculture also, agriculture 2000 पूर्वरु Odisha was a rice deficit state, and today we are exporting rice. Same case with power also, we are generating excess power currently and we are exporting to other states as well. So every way we have developed a lot, prospered a lot, and Odisha has a lot more potential as well in the coming days. And right now our CM has seen a vision for Odisha to be the #1 state in India, and I am very confident it can be done easily because we have everything that is required. We have the raw material, we have the production capabilities, we have the service sector for us, we have the adequate manpower to cater to this. We have a beautiful coastline where the ports are there, where we can export our material that we can manufacture here. So every way Odisha has the potential to be one of the biggest economic state in India. अंकित क्रिटिसिज्म को केमते हैंडल करंदी? So criticism को constructive criticism is always welcome. आपण गोटे perception रे किसी जिनस को conduct करंती, but validation is always important कि आपण if we are doing the right thing or not. So constructive criticism is always welcome, but negative criticism, some people do that because of they get the fun out of it. So that is fine, but I always welcome constructive criticism. क्रिटिसिज्म कथा उठला, नेपोटिज्म कथा उठे कि आपण को बापा पॉलिटिक्स रे थिले सिपा आपण गोटे स्टेपिंग स्टोन मिलगला, केमती आपण से देखंतु आपण बहुत भलो क्वेश्चन पचारले. नेपोटिज्म जदि आपण कहिबे इन द एंटायर पॉलिटिकल स्फीयर इन इंडिया, सो ऑब्वियसली जे भी सेकंड जनरेशन पॉलिटिक्स को एंटर करूची, they obviously have an advantage compared to others. But again, आपण यदि देखिबे कि our party Biju Janata Dal has selected me as the candidate for Mahanga constituency. से माने मो देर किछि पोटेंशियल देखि पारले जोथि पाइन कि से मते लोकमानक रिप्रेजेंटेटिव हवा को दे गेव मी एन अपॉर्चुनिटी, राइट? देन सेकंड पार्ट इज कि दिस इज अ इलेक्शन, राइट? सो जदि लोक माने मते देखि परबे कि मो पाकर सी पोटेंशियल अछि आ कैपेबिलिटी अछि कि मु तांगा डिमांड्स को ग्रीवेंसेस को केटर करि परबी एंड तांगा वॉइस को ने कि ओडिशा असेंबली रे पहुंचे परबी एंड आई कैन गेट थिंग्स डन फॉर देम, दे विल मेजर दैट, राइट? जदि इफ दे थिंक आई कैन डू दैट, देन दे विल श्योरली ब्लेस मी with votes on 1st of June.
जेहेतु अपन जो नेपो किड अपन को बापा काम करछनी तो अपन को गोटे एक्सपीरियंस अधिक अछि सेटा गोटे प्लस पॉइंट नुई कि नेपो किड हबारे एक्सपीरियंस भी अधिक एक्सपेक्टेशन भी लोक मानकर अधिक 100%. I think Nepo kid sounds very wrong, but again, advantages अच्छी for sure. तांका जो experience for the last 40 years जो experience ये अच्छी तांकर ताको मु surely use कर परिबी लोगों को benefit पाएंगी and तांका ठुर बहुत जिनस मु सिखी परिबी जोटा कि future रे मु लोको माननकु आउरी केंति better तांको good governance दे परिबी तांका ପାଇଁ कि रिजॉल्व केंति कर पारे तांका इश्यूज बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स केमती मु इंप्लीमेंट कर पारे तांका ପାଇଁ कि ई सब जिंस को मते हेल्प करिवो तांकर नॉलेज एंड एक्सपीरियंस मो फ्यूचर ପାଇଁ कि एबे भी अच्छे गाइड करबा को किछि प्रॉब्लम हेले बाबा गाइड कर दे निश्चित निश्चित सब पेरेंट्स माने हमें जतल भी किछि प्रॉब्लम होय हमें जदी कहा पाखु फर्स्ट जाऊ सेरा जो हम पेरेंट्स को पाखु ही जाऊ तो को भी पेरेंट्स के हम असुविधा समय में सब बळे हमको एडवाइस ही करंती तो मो पेरेंट्स भी सेमती मते जदि किछि भी इश्यूज हुए मु तांका पाखु जाए एंड से मते तांकर जहा भी विजडम मते दियंती कि दिस इज हाउ इट कुड बी हैव बीन डन लाइफ रा मंत्र कानो लाइफ रा मंत्र होची कि स्मॉल थिंग्स मैटर तो दैट इज हाउ आई टेक लाइफ एंड आई फोकस ऑन डूइंग द स्मॉल एंजॉयमेंट्स हैविंग स्मॉल मोमेंट्स विद इन लाइफ गोटे पर्सनल सोर्सेस रो जानिली कि आपण हैंडीकैप मन को ट्राइसाइकिल दिचन से को सोशल मीडिया रे वायरल हेनी कोठी की जानि नंदी आपण कोन एटा सत्य कथा कि हां तो सो दिस इज समथिंग इज वेरी पर्सनल टू मी एंड माय फैमिली तो हमें फ्रॉम आवर ओन सोर्स फंड we ame 150 ta tricycles ame distribute करछु to physically disabled people जो to improve their quality of life महांगार and adjacent किछि constituencies रे किछि लोक मानको right तो तांगा quality of life को improve करिबा को and सीए केमती able हेबे तांको परिवार को सहाय्य करिबा को काहे कि मोबिलिटी न हेले गोटे लोक मतलब they are worthless completely, they won't be able to do anything, to be very frank. तो सही जिनसटा को केमती हमें eradicate करी परिबो सही initiative टा my parents and me and my sister have taken up. महांगा वासिंग को पई किछि मेसेज रखिबे हम सो माध्यम रे महांगा वासिंग को खाली गोटे जिनस कहबी कि मु बहुत ग्रेटफुल आउ they have blessed me with so much love love and blessings मतलब से माने मते गोटे निज पुओ भलिया निज भाई भलिया से मते एक्सेप्ट करचंती ता पई मध्य मु बहुत ग्रेटिट्यूड तांकू देबी एंड सिंस 2000 महांगारे किछि पंचायत अछि जोडा कि मो फादर किशन नगर तले फाइट करतले सेही पंचायत भी महांगारे एडेड अछि तो सही पंचायत लोक माने जो माने लास्ट 25 इयर्स हेलानी तांका तो हमर रिलेशन अछि मु पर्सनली बहुत लोक मु जानछि सही पंचायत रे मुतले 3-4 इयर्स थ्री मु तांको सेतळु जानछि के बाबांग सहित डोर टू डोर जाइछंती पब्लिक कम्युनिकेशन निश्चित मतलब इनफैक्ट मु एतले बहुत छोट थली 3-4 इयर्स रु मु एतले बाबा हमकु नै कि बुलांती लोकन पाखकु आमे सबल देखिछु तांका अप्रोच से लोकन सहित कथा होंती कि रिजॉल्व करंती ऑन द स्पॉट तो आमे छोट बळु ए जिंस एक्सपीरियंस करि आछू तो गोटे एक्सपीरियंस आपनकर छोट बळु अछि निश्चित गोटे एक्सपीरियंस अछि कि लोक माने केमती अप्रोच करिया कथा हाउ डू यू स्पीक विथ द पीपल बिहेव विथ द पीपल से हम्बलनेस डाउन टू अर्थ एटीट्यूड ए सब जिंस बहुत इंपोर्टेंट जतले आपण लोकन से डील करचंती एंड एंड ऑफ द डे वी आर डीलिंग विथ समवन हु हैज इमोशंस राइट एंड तो आपन से रेस्पेक्ट भी दवा दरकार टू योर ह्यूमन सोल तो सब जिनस को आखे के रखी कि भी आमे बाबा ठुर बहुत जिनस ए जिनस छोट बड़ देखि आछू सिखिचू से लोकों के केंती डील करंती केंती कथा होंती सो ऑल दोस थिंग विल हेल्प मी इन फ्यूचर अंकित आज पॉडकास्टिंग को एट सारिबा किंतु छोट एक छोट रैपिड फायर पारे क्रिकेट ना वीडियो गेम्स क्रिकेट बैटिंग ना बॉलिंग
बैटिंग, आउटगोइंग पर्सन ना इन हाउस पर्सन? इन हाउस, बाइक राइडिंग ना कार ड्राइविंग? कार ड्राइविंग, बीच पर्सन ना माउंटेन पर्सन? माउंटेन, इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट? इंट्रोवर्ट, टाइम विथ गैजेट्स और नेचर? नेचर, पापा's boy और mama's boy? obviously mama's boy. ओके, थैंक यू अंकित. असेच असेच धन्यवाद देते हेक्टिक टाइम भितर Thanks to you also for taking out time, to your entire team as well for taking out time and for within such a short schedule आपण असे की इंटरव्यू नेलं. Thanks for that also. आमे आशा करू आपण निश्चित जितंदु महांगावासी को जहाँ भी स्वप्न देखछन्ते निश्चित पूरा करो. Thank you so much. Thank you, Thank you. Ankit. Thank you.